Assalamu alaikum. Welcome to English Literature and Grammar. So in this video we will be talking about the rise of 18th century novel. So before going further, we must know the dictionary definition of a novel. The definition of novel is a fictional prose narrative of considerable length, typically having a plot that is unfolded by the action, speeches, and thoughts of the characters. So it is a prose form, it is in a narrative form, it is fictional, and it is of a book length, and it is having a plot that is unfolded by the actions of the characters. It is the definition. So when a form of or the genre of literature takes a shape, it needs decades and centuries. When a trend is taking shape, then we are not exactly clear of its origin. Novel is a new form. Happened recently, 300 years ago, novel came into being. There were not novels earlier in England. This genre rises when there were certain historical and social circumstances. People demanded something, and the writers were inspired by certain issues and problems, and they wanted to say something about these problems and include those issues in their writings. They also directly or indirectly suggest solutions, so they raise further questions about the issues. So we can say that problematizing of the issues is an important part of a novel writing or literary writing. And when reader is shown something new, readers start thinking. So thinking also is an important part of evolution of novel. Writers may or may not know each and everything. He may be wondering about things around him. So sense of wonder is also an important part of a novel. People may think, people may wonder and ask questions. So the origin of novel can be seen as problematic because it's a kind of a big question. Novel is not there in 15th century, but novel is there in 18th century. So what was special in 18th century which gave rise to the novel? This specific genre or this form came into being. So there are some factors that influenced this type of writing, literary writing, because there were changing literacy rate in earlier 18th century, and the rise of middle class was there, and advancement in printing was there, technology, printing technology was there, and also some kind of new forms, literary forms were there, like epistolary in the writings were there in the form of letters, and then they were combined together. So it was a new thing which was being created by the writers. So these factors also influenced the writers to write something new. इनसे पहले अगर हम बात करें तो मिडिल इंग्लिश में हमारे पास है ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मैंडेविल, थॉमस मेलोरे का मॉर्टे द आर्थर, वो भी स्टोरी टेलिंग फॉर्म में था। चौसर की कैंटरबरी टेल्स हैं हमारे पास, वो भी नरेटिंग स्टाइल में है, लेकिन वो नॉवल नहीं है एक्चुअली, लेकिन वो है स्टोरी टेलिंग में। तो जब इनके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो फर्स्ट नॉवल कंसिडर किया जाता है वो है डेफो का रोबिन्सन क्रूसो। बट इन 18th century डेफो वॉज नॉट अ ट्रस्टवर्दी राइटर. He didn't know that he was producing some work like novel, but in 20th century he is recognized as a writer, novel writer. So we know that he was using his imagination. He has certain ideas and sense of values, that he was depicting human being with a mission. He was not known in his own time as a novelist. Okay, so we know that we now know that he was using some kind of techniques. But later we found that his work is very close to a novel. He is telling human weaknesses and faults. He was very popular but was not regarded proper literary in his own time. Now the question arises in our mind that why something which is popular, thousands of people are reading it, but it is not literary. So what is literary? Actually, literary is something that is bound with taste, having sense of beauty, having lofty with a message, and having a purpose for the betterment in society. So popularity is different, as something abusive can be popular, improper can be popular. Every popular thing is not a good one. A literary thing, it should make us better human being. It should not spread hatred and enmity. So popular things are very harmful for society. Generally, popular things are liked as they are close to the reader's heart. So Defoe at first failed to arouse what can be said the literary, because his work was
the account of his own travel, and the major character, or we can say the protagonist in his work, Robinson Crusoe, he was a picaro. A picaro is unreliable person, and Pickerick's novel is the one that did not serve any particular purpose for writing. Okay. So many of his novels, Defoe's novels, were lumped together in the public imagination, and readers were not yet aware that a new genre was with them. Yet they read his work. So English novel in earlier 18th century was read because of its popularity and newness, because of its witty jokes and interesting themes, not because of engaging quality, not to raise questions. So novels were read because they created a sense of happiness in the reader's mind, एंड दे वर इजीली अवेलेबल बिकॉज पोइट्री जो थी उस दौर की वो बहुत हाई फाई लिखी हुई होती थी, वो आम इंसान की सर से ऊपर से गुजर जाती थी, वो समझ ही नहीं आती थी. और जहाँ तक बात है ड्रामा की, तो ड्रामा को तो स्टेज चाहिए, इनेक्टेड ड्रामा नीड्स अ स्टेज टू बी एनेक्टेड. ड्रामा कोई इंडिविजुअली तो नहीं पढ़ सकते ना आप लोग, वो तो देखने की चीज़ है, उसके तो थिएटर चाहिए, एक्टर्स चाहिए, स्टेज चाहिए. तो ये तो नावल जब आता है आपके हाथ में, तो वो तो आप खुद आप अपनी इमेजिनेशन यूज़ करते हो, आप एक सिटिंग में उसको पढ़ सकते हो, आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हो. तो ये तो एक ईजी सी थी, एक न्यू चीज़ और ईजी. सो बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ हैप्पीनेस, इसीलिए इसको पढ़ा जाता था. लेकिन वो नावल नहीं थे जो शुरू वाले नावल्स क्रिएट किए गए. अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता कि नावल कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन वो नावल के जैसे थे, एक नई चीज़, एक नया जानरा शेप ले रहा था. जैसे कि आजकल के नावल हैं 19th और 20th सेंचुरी के, वो वैसे नहीं थे. लेकिन इन रॉबिन्सन क्रूसो प्रीफेस देयर आर मैनी वर्ड्स फॉर नैरेटिव. सो नैरेटिव इज़ अ स्टोरी विद अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड. नैरेटिव में क्या होता है, आपके पास एक बिगिनिंग होता है, एक मिडल होता है और एक एंड होता है. बिकॉज यू टेल पीपल डायरेक्टली अ स्टोरी, आप लोगों को एक डायरेक्टली स्टोरी बता रहे हो. एंड ये एक आर्ट है. यू टेल पीपल डायरेक्टली, रीडर इज स्पेल बाउंड टू हियर द राइटर. अकाउंट जो है ना वो नैरेटिव से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो डिस्क्रिप्शन होगी. और एडवेंचर जो है वो थोड़ा सा, वो भी डिस्क्रिप्शन ही है, बट इट नीड्स एन एक्स्ट्रा एफर्ट विद रिस्क इन इट्स. सो हम कह सकते हैं कि नैरेटिव जो है, नावल जो होता है वो नैरेटिव फॉर्म में होता है, स्टोरी टेलिंग में राइटर बता रहा होता है सारा कुछ. अब ये कुछ वर्क्स हैं, अर्लियर वर्क्स हैं जो रिगार्ड किए जाते हैं एज अ नावल. डॉन क्वाइटो है 1615 में, उसको एक नावल क्रिटिक्स कंसिडर करते हैं एज अ नावल, बट दिस वाज नॉट अ नावल. बट लेकिन इस वर्क ने हेल्प किया बहुत राइटर्स को नावल लिखने में. फिर आता है जॉन बनियन का पिलग्रिम प्रोग्रेस इन 1678. ये भी नावल के करीब करीब है, बिकॉज इसमें मॉरल और साइंस स्टोरी की तरह है. फिर आता है एफ्राबैन का ओरोनोको, ये भी 1688 का वर्क है, इसको भी नावल ही मतलब कंसिडर किया जाता है अर्ली. फिर आ जाता है डैनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो 1719 में, इसको भी क्रिटिक्स क्या कंसिडर करते हैं, एक नावल. देन जोनाथन स्विफ्ट इज़ देयर विद गुलिवर ट्रैवल. फिर उसके बाद 1740 में एक बिल्कुल शेप्ड आ जाती है नावल फॉर्म की, वो हमारे पास है सैम रिचर्डसन का पैमेला. पैमेला एक्चुअली एक स्टोरी है फीमेल चेस्टिटी पे. तो ये फीमेल चेस्टिटी, ये अच्छा, उस दौर के राइटर्स वो चीज़ें नावल में डिस्कस कर रहे हैं जो कि उस दौर के मतलब पढ़ना चाहते थे. बिकॉज जो 18th सेंचुरी नावल है, या जो वेरी क्लोज टू नावल हम कहते हैं, उसमें एक अ टेल इज़ टोल्ड, नैरेटिव इज़ देयर, ट्रैवल वहाँ पे होते थे, एडवेंचर्स होते थे और हिडन डिज़ायर्स होती थी विच सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट. तो पैमिला में जो उसका मास्टर है वो उसको सड्यूस करता है, तो वो इसी तरह की हिडन डिज़ायर्स दैट सोसाइटी डज नॉट एक्सेप्ट. सो वीमेन आल्सो स्टार्टेड राइटिंग, वीमेन राइटर्स वर देयर एंड वीमेन रीडर्स वर देयर. Then it is a work of Henry Fielding, Joseph Andrews. Henry Fielding को वाल्टर स्कॉट ने फादर ऑफ इंग्लिश नावल कहा है. हेनरी फील्डिंग इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश नावल बाय वाल्टर स्कॉट. इन्हीं को कहा जाता है जिन्होंने जोसेफ एंड्रयूज़ लिखा था. वो भी उन्होंने पैमिला के ही उस पर लिखा था. उसमें एक फ़ीमेल है कैरेक्टर पैमिला, और इसमें जोसेफ है मेल कैरेक्टर. ये मेल चेस्टिटी पे है, वो फीमेल चेस्टिटी पे है. सो
ये जो अर्ली राइटर्स हैं, डेफो है, जोनाथन स्विफ्ट, सैमुअल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न, टॉबियस स्मॉलेट, इन राइटर्स ने नावल को शेप देने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। इन्हीं की वजह से एक न्यू जानरा शेप में आते 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 एट लास्ट वो विक्टोरियन नावल जो एक बहुत मशहूर और बहुत खूबसूरत होके फिर तहरीर किए गए, वो इन्हीं की कोशिशों की वजह से थे। थैंक यू।